Hi, hi to you all. My name is Nikita, and I'm a student of Master Praveen. So I just want to share my experience of doing the teachers training online course from Master Praveen. So before that, I just want to share how I was before joining his online course and how I became after joining his course. What I learned from him. So before I started my journey with him, like since 2 years I was into yoga. So I happened to go to a yoga institute where I was doing yoga in regular classes, not as a teacher but as a student. So there I have learned yoga for 1 year. I have got a lot of benefit from there, and that's how I got interested in yoga, and I have been doing from like since 2 years. I have studied a lot about it. I have gone to different yoga masters for doing the course, and I was into a course, but due to the lockdown that has been stopped because it was a regular institute. So for time being it had been stopped. And like I always used to follow Master Praveen's YouTube channel, and I used to think that how will I get the opportunity to learn from him. But this luck has turned on to me. So in this lockdown he happened to come to India, and before that I was just doing regular practice, like learning from other institutes and stuff. So I used to just do it myself without knowing so much, without having so much knowledge about yoga, how to do it, what are the proper alignments and how it affects your body. I just used to do because I know that I had to practice and I had to learn. So that was the sense of doing yoga for myself, because I used to like doing yoga. But yes, in this lockdown he came to India, and he got out this opportunity for all the students or whoever likes yoga, that he'll provide online classes for us. And so I didn't join the regular online classes, because he came up with a course which is called Yoga Alliance, like yoga YTTC, Yoga Teachers Training Course, which will be certified by the Yoga Alliance, and a regular certificate would be provided. So I happened to take the details from him, and I was very much excited that doing an online course I would be getting a regular certificate. I had enough I was enough happy that I would be getting the opportunity to do the classes with him. So that's how I started the journey 40 to 50 days back with him. So the first class itself I was like totally flourished with the experience that I got from him, and I was really happy. But while through the courses, each and every day he used to give us so much knowledge. Like I was so happy, sir, that like every day we used to get some of the other knowledge. He used to keep us like a kid of him. He used to care for us so much, though it was an online course where we are miles and miles away from each other, but he never like made us feel that he is away from us. He used to take care of us so much. He used to handle us so well, and he used to give every knowledge, each and everything. He used to make us understand so well. He Whatever he experienced in his life as a yoga teacher, he gave us everything. That knowledge was a raw knowledge which none of us would get in books. How much ever we study, how much ever we go to institutes, I am sure, I am like very much 100% sure that the knowledge we got from Praveen sir, we would not get from anywhere, because that's his experience, what he taught us. And it was like every day, each and every day, we used to learn so many different things. Every day he used to educate us so well. He used to screw us, like he used to scold us as a kid, and he used to care for us. He used to motivate us every day to do something for us, to practice for us, so that we give the knowledge to others as well. He made us
an experienced teacher, because I used to I am a teacher, and I used to teach my students before I joined him. But I didn't have so much confidence about myself, and I didn't have so much confidence in I had, but it was like somewhere it was missing. But as soon as I joined him, he gave us so much confidence. He made us happy. Like he taught us how to be happy, and he taught us how to make others happy. So you have made our life, sir, and thank you so much for each and everything. We are never going to leave you, sir. We are your kids, and we always want to be your kids, and you have made our life, sir. So it was a lovely experience, and I would tell each and everybody, whoever is seeing the video, if you are a yoga practitioner, or if you want to learn yoga, if you want to practice yoga, if you want to have changes in life doing yoga, please go forward. And you can also take the instructions. You can also take classes from him, and you will definitely have a lovely experience, and you are never going to leave him. He's a very good teacher. He's very caring, and he gives everything, whatever knowledge he has. So we had a lovely experience with you, sir, and thank you so much for each and everything. Namaste, Hari Om. Thank you, Master. नमस्ते सर, आई एम रमा। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ सर कि मैं आपसे जुड़ पाई और आपके इतने सारे कोर्सेज़ कर पाई। और ये जो आपने 200 आवर्स वाला कोर्स लाया, शायद ही मैं घर से बाहर जाके कोर्स कर पाती, पर आपकी वजह से मैं कर पाई हूँ। और आपने जिसमें बेसिक से एडवांस तक इतना हमें डीप एक्सप्लेन किया है, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे पोस्चर का अलाइनमेंट हो, क्लास डिज़ाइन हो, कोई सीक्वेंस हो, या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना हो, आपने अपने 100% एफर्ट डाले हैं और हमें इतना दिल से सिखाया है। हमें समझ में आता था सर, जब आप हमें बोलते थे कि आज ये हमारा टारगेट पूरा करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता था। आप अपने एक पोस्चर को समझाने में, हमें एक्सप्लेन करने में हमसे इतने कनेक्ट होकर, अपने स्टूडेंट से इतना कनेक्ट होकर सिखाते थे और इतना रम जाते थे कि वक्त कब निकल जाता था पता नहीं चलता था। और ये बेस्ट टीचर की क्वालिटी है, आपने ही हमें सिखाया है और हमें समझ में आता था। वो शायद ही हमें कोई और टीचर इतना अच्छे से समझा पाता या सिखा पाता। तो हम सच में खुशकिस्मत है कि आप मिले हमें और आपसे हम जुड़ पाए। मुझे तो ये सब कुछ सपना लगता था, पर मैं आपसे जुड़ पाई, आपका सूरत का 30 आवर्स का कोर्स कर पाई, आपके ये सारे कोर्सेज़ कर पाई। तो सच में मैं तो भाग्यशाली हूँ। और काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे अंदर, बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें। सर आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और हमें ऐसे ही सिखाते रहे। हम भी आप धन्यवाद तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर हम जो भी बोल रहे हैं आपसे वैसे ही कनेक्ट होके दिल से बोल रहे हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं। कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें ऐसे ही सिखाते रहें। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि जो आपने सिखाया है वो शायद कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपने ये सिखाया है कि आसन में जाना कैसे है, आसन करना कैसे है ये तो सभी सिखाते हैं, लेकिन आसन में जाना कैसे ये किसी ने भी नहीं सिखाया जो आपने सिखाया है। अलाइनमेंट क्या होती है, पोस्चर करेक्ट कैसे किया जाता है, वो कभी देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम पता चला कि ये इस तरीके से होता है। और इतने इजीली आप किसी भी आसन में ले जाते हो। आप कभी ऐसे किसी को पुश करते हो, लेकिन ऐसे नहीं, एक्सट्रीम नहीं। एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलता, ये आपसे सीखा है कि एक ही दिन में आप एडवांस में नहीं पहुंच सकते। एडवांस होता क्या है, ये आपसे सीखा है कि एडवांस वो होता है जो थोड़ा सा आपकी लिमिट से ज़्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश से बनता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनता है, एक लॉन्ग प्रैक्टिस टाइम से बनता है। इवन आपको देखती हूँ तो आप अभी तक 2 आवर्स आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और सर कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टाइम कम है। तो हमेशा आपको ऑब्ज़र्व करती हूँ, आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ क्लास में।
हमेशा स्माइलिंग फेस रहते हो। आपको मालूम है कि आपको कहाँ कहाँ गुस्सा करना है ये भी पता है, बट वो गुस्सा बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, आता है विद अवेयरनेस होता है, वो गुस्सा आता है चला जाता है, मतलब मन में कुछ नहीं होता, आपके मन में रखते नहीं हो उसको। और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, और पेशेंस बहुत है सर आपके अंदर। वो पेशेंस था सर, उस पेशेंस ने मुझे आपके आगे बोलना या किसी के आगे कैसे बोलना है वो आपने सिखाया है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आई थी तो मुझे पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाके मुझे मेरा वो चीज़ ख़त्म हुई। अदरवाइज़ आई गॉट पैल्पिटेशन, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ चलता है आपके आगे, मैं बोल नहीं पाती कुछ भी। लेकिन आपका वो पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा है कि आपने हमेशा बोला ठीक है अभी नहीं बाद में। उस चीज़ ने बहुत ही हिम्मत दी मुझे। आपने कभी इग्नोर नहीं किया, आपने कभी ये नहीं बोला कि ठीक है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम ठीक है। आपको क्या ज़रूरत थी मुझे करवाने की या ऐसे स्टूडेंट को कराने की जो बोल भी नहीं पा रहा, बट आपने किया सर। एंड समटाइम्स आई फील सो ब्लेस्ड कि आपकी क्लास में बैठे बैठे मैं कई बार मुझे रोना आ जाता है। तो और आपका अपना पैशन, आप बहुत पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने योगा को लेके, अपने प्रैक्टिस को लेके। एवरी डे यू प्रैक्टिस सो हार्ड। और क्लास में आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, बट शायद टाइम बहुत कम है। और मैं आपका दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे मन में फीलिंग्स बहुत हैं, बट थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, Praveen sir. Really blessed and lucky to get a chance to learn from you. I started from just basic, normal, advanced flexibility classes with you, and then switched to YTTC 200 hours with you. And I was in a dilemma whether I should do it or not, because I have done earlier also one course, but just it was awesome, and I think I took the right decision to do the course with you, because what I could not learn before with doing so many courses before, I learned it with you. Excellent, the teaching method, the alignment, the way you teach, the way you give so much time in to each and every asanas. Nobody gives that much, and I learned so much. It's not only about the flexibility, it's about how to do the right way, so that we give a safe practice to our students. It was just awesome, which I have never learned before, and I think it was my best decision to do this YTTC 200 hours with you, because learning of the small detailing in each asana I have never ever learned anywhere. And thank you so much, and I just hope in future also I will keep learning from you and gain that knowledge of this abundance knowledge of yoga. I think there is no end to learning about you, and you are just such a humble teacher I have ever met, who just learn from their student also, which I have never seen this quality in any guru also, who learns the smallest things from the student also. So thank you so much sir, and I'm really blessed to learn from you. Thank you so much. Hello, Assalamu alaikum. My name is Tani. I am from Bangladesh. Today I want to talk about my yoga journey with Master Praveen. First I went to Vietnam, then I got 100-hour certificate. During this pandemic of COVID-19, I received 200-hour certificate from Master Praveen. After doing this YTTC, my all problem is over now about yoga. My confidence level increased a lot. I am so happy to be able to learn too much in this course. Master Praveen, you have given your best effort how to take class, body alignment, body movement, pelvic movement, lateral movement,
class sequence, class designs, from Savasana category level, spiritual, anatomic, skeleton, so many philosophy and theory. I can't explain now by writing and learning a lot. Master Praveen, you are very good teacher. You explain very nicely. You cannot be compared with others. There are students from many countries in this course. All the students are happy and satisfied. We enjoyed a lot. I saw who have been doing YTTC from you. They are now very good yoga teacher. Yoga does not depend on 100 hours or 200 hours. Yoga is my passion. I will try to continue with you. So thank you so much for your best trying, and thank you so much Master Ajay and Master Shivangi. Thank you. नमस्ते, मैं हरवीर शर्मा पिछले 2 साल से योगा कर रहा हूं, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मास्टर प्रवीण कुमार वर्मा जी के संपर्क में हूं। मास्टर प्रवीण कुमार वर्मा जी से मैंने अप्रैल 2020 से लगातार ऑनलाइन क्लासें मैं उनसे सीख रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने बिगिनर्स कोर्स, एडवांस कोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स, एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स 25 आवर्स, 35 आवर्स और 200 आवर्स और 50 आवर्स के मैंने कई कोर्स उनसे सीखे हैं, और 200 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी मैंने उनसे सीखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग इस फील्ड में अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मास्टर प्रवीण कुमार वर्मा जी, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज उनको है। तो और उनकी जो टीचिंग एबिलिटी है, उनका जो सिखाने का जो तरीका है, उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो भी लोग सीखना चाहते हैं मास्टर प्रवीण कुमार वर्मा जी से सीखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Namaste Praveen sir. Last day of the class today and I'm immediately recording my experience with you. This batch not only taught us the importance of strength, flexibility and focus on weight loss, but it has taught us the value of discipline sir. एंड अब लास्ट डे होके भी पूरा महीना कैसे चला गया ये समझ में ही नहीं आया। इतने प्यार से आपने हमको सबको एक डिसिप्लिन में लाया है, जस्ट लाइक अ गाइडिंग मदर हु ब्रिंग्स ऑल द चिल्ड्रन and makes them understand the value of discipline. You have been a guiding force for all of us. आपको अभी रोज़ 6:30 बजे को देखने की आदत हो गई है और कल से नहीं देखेंगे तो थोड़ा बुरा लग रहा है, बट स्टिल आपने जो क्लासेस और इंटेंसिटी से हमको लेके गए, आई थिंक द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर वॉज एट द एंड ऑफ द क्लास, जब आप बहुत सारा टॉर्चर करते थे और एंड में बोलते थे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपकी योगा प्रैक्टिस करते रहिए. So that was very encouraging for me at least to get up early in the morning and see what is going to be the torturous session today. This has happily come to an end and it was a great learning experience. Strength has improved, flexibility has improved. I'm following the diet pattern. It is also helping me, and I'm becoming more and more relaxed, more and more positive by mind and positive by body. Thank you for organizing this class and wish to learn a lot from you, sir, ahead. Thank you. Hello, my dear friend and guide, Master Praveen. It has been a wonderful session throughout, my brother, and I had been longing for it for so long. And you helped me to motivate myself to follow the right regime in order to achieve my fitness back. And believe you me, you sometimes reminded me of my training days in the army. I missed a few classes due to persistence of injury, but you boosted everybody's morale high with your classy commands and masterly wisdom. You have been a real blessing, brother. And you have especially boosted my morale during those extra classes during the weekends, and I'm sure a lot more people have been put back on the healthy track. You have been an amazing asset, my brother. You are amazing. Love you. Hello, আমি মানুষী শিউরি বীরভূম ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে লাস্ট 1 মান্থ থেকে প্রবীণ স্যারের সাথে ক্লাস করছি। रियली सच ए गुड एक्सपीरियंस। इतनी अच्छी तरह से वो सिखाते हैं और उसके सिखाने की टेक्निक भी बहुत अच्छी है, केयरफुली सिखाते भी हैं। नेक्स्ट बैच में मैं आ रही हूँ, आपको मुझे झेलना पड़ेगा। थैंक्स टू कोविड-19 जिसकी वजह से आप हमारे इतने करीब आए हैं, और स्माइल फेस के साथ योगा करते रहिए, ये हर वक्त कानों में गूंजती रहती है। थैंक यू सो मच सर जी। नमस्ते, ओम शांति। Pravita, hi. I just wanted to
give my feedback, I want to say that the last 1 month, even though I have been practicing yoga for a very long time, especially early mornings, I used to feel very sore and I was not able to continue practice. But after coming to your class, it is mild as well as it is very intense at the same time. So you took us in the right intensity. I feel my body is becoming more flexible. I'm able to attempt more advanced asanas, so I really want to thank you for that. And not only that, every day has started with such a positive note, beginning with your classes, and it has taught me a lot of discipline. So for the last 1 month, there has been a pattern, and I'm able to do so much better. And thank you for the positivity every day morning, and also the discipline. Thank you very much, Praveen sir. I enjoyed the last 1 month a lot. Thank you.